Hello friends, let's talk about today's cue card. So today I'm going to talk about describe a town or city where you would like to live in future. ठीक है, तो किसी टाउन और सिटी के बारे में आपने बताना है जहाँ पर आप फ्यूचर में रहना चाहते हैं. So whenever you are reading the cue card, make sure you read it very carefully कि ये कौन सी सिटी के बारे में है. Is it somewhere where you have lived? ठीक है, जहाँ पर आप रह चुके हैं या फिर आप जहाँ पर रहना चाहते हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट रीड द क्वेश्चन करेक्टली वट एवर यू विल बी स्पीकिंग वुड ऑब्वियसली गो रॉन्ग. ओके, तो यहाँ पर किसके बारे में है? वुड लाइक फ्यूचर. तो हमें फ्यूचर के बारे में बताना है जहाँ पर आप रहना चाहते हैं. वो टाउन भी हो सकता है, सिटी भी. द फॉलो क्वेश्चंस आर फर्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी. तो अपने सिटी का नेम जरूर बताना है. सेकेंड, यू नीड टू टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़ कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं. एंड थर्ड, यू नीड टू टॉक अबाउट द रीज़न दैट वाई डू यू वांट टू बी देयर कि आप वहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं. सो मेक श्योर वंस यू रीड द क्वेश्चन वेरी carefully, very nicely and focus on 3 bullet points and answer all the bullet points before the examiner stops you. Okay? Because अगर आपने क्यू कार्ड कंप्लीट नहीं किया, एग्जामिनर के रोकने से पहले सारे पॉइंट कवर नहीं किए, 3 या 4 जितने भी हैं, obviously you will be losing your points for that. So we'll start with it. Obviously we give a very brief, a very simple sentence for introduction instead of straight away talking with the name. Introduction I have taken here is, so you can say I have visited handful of cities in my life so far. I have visited handful of means muthi bhar means some. So when you say I have visited some, don't say some, you would say I have visited handful of cities in my life so far means अब तक, आज तक. तो आज तक मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ विजिट किए हैं. हाउएवर चंडीगढ़ हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड ऑन द टॉप ऑफ माई प्रायोरिटी लिस्ट. लेकिन मैंने जितनी भी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें हमेशा से टॉप पर जो सिटी रही है दैट्स चंडीगढ़. Okay, so this is how a very simple thing you would say that I have visited many cities but Chandigarh is the place which I like the most. So this is a simple way of asking, and here I have added a few words like handful, so far. Then you would say remained on the top of. Then since I have taken the name of the city, अब मैंने obviously 1-2 लाइनें और इसके बारे में बोलनी है बजाय कि immediately I switch to the second question. So I'll talk more about it. It is known as City Beautiful. So Chandigarh, the other name of the Chandigarh is City Beautiful because it is exactly a very beautiful, clean and green city. The more about it is it's capital of Punjab and Haryana. कि ये पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट का कैपिटल है and it is a well planned city. So this is something about the name and location about it. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट फैसिलिटीज़ आर देयर कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या कौन कौन सी एमिनिटीज़ हैं. एमिनिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़. सो द फर्स्ट पॉइंट, नाइसली प्लान फुली इक्विप्ड सेंटर्स. सो चंडीगढ़ इज़ अ सिटी विच इज़ नाइसली प्लान, पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया है. एंड दिस सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स. प्रॉपर सेक्टर्स हैं और जितने भी सेक्टर्स हैं वो एक तो वेल प्लान्ड है और फुली इक्विप्ड है. फुली इक्विप्ड मीन्स ईच सेक्टर हैज़ इट्स ओन स्कूल्स, कॉलेज, देन इट्स ओन लाइक मार्केट प्लेस, रेजिडेंशियल एरिया, रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल्स एंड गुरुद्वारा साहिब. Second, it has the world famous tourist attractions. So अलग अलग places से जो tourist हैं they love to visit Chandigarh. So tourist attractions such as Sector 17 shopping arcade. Then I can talk about market, Sector 22 market which fulfills the requirement of each and every human being. Then we have Sukhna Lake which is an artificially created lake, rock garden, rose garden. You can talk more about it. Here I have just given you an idea कि आप क्या क्या चीज़ें include कर सकते हैं. So in facilities you can just talk about the tourist attractions. सुखना लेक है, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, मार्केट है, सेक्टर 17, 22. तो इनके बारे में अगर आपने ऐड ऑन करना है आप 1-1, 2-2 लाइनें ऐड ऑन कर सकते हैं. दैन वी कैन टॉक अबाउट इलांटे मॉल विच इज़ क्वाइट फेमस. सो इट इज़ अ साइनोशोर. साइनोशोर क्या होता है? इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स एवरीबडी. ठीक है, सो इलांटे मॉल इज़ अ साइनोशोर विच caters, ऐसा आएगा, caters
द नीड्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, तो हर एक एज ग्रुप की जो नीड है वो पूरी करते हैं, वेदर इट इज़ योर वीकडे, वीकेंड, योर बर्थडे, योर मैरिज एनिवर्सरी, you want to go for shopping, you want to go for your daily groceries, games for children, movies, so everything is there in Elante Mall. Okay, then most important, if I want to live in any city, I'll definitely be talking about health facilities, because once and all, obviously everybody needs these facilities. So these facilities are here. I'll talk about renowned and reliable. Renowned means famous, एमिनेंट, तो बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो हेल्थ सेंटर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड वन अमंग दैम इज़ PGI. सो PGI इज़ वेरी फेमस फॉर द काइंड ऑफ लाइक ट्रीटमेंट इट इज़ प्रोवाइडिंग, इट इज़ ऑफरिंग टू इट्स पेशेंट्स. ठीक है. So facilities I have counted, sectors, then all the tourist attractions, then Elante Mall, then health centers. Even if you want to talk about universities and quality of education, that could also be, but here I have added it here about education. Then third, I need to talk about the reason why do you want to be there, that why I have chosen Chandigarh over all other cities and villages. I need to talk about the reason. So the very first is, it is the best fit for career progression. Since I'm quite career oriented person, so I have realized that this city is the best fit, means the most suitable place for my career progression, आगे बढ़ना, करियर में तरक्की करना. And at the same time it offers ample of job opportunities. Ample of means sufficient, enough. तो बहुत सारी job opportunities है, whether you are highly educated or whether you are uneducated, but obviously you will be getting one job to do in Chandigarh. Then if I talk about the people, because it is not only the city I like to be living there, it's obviously the city is also basically created with the people. कि अगर कोई खाली city होगी तो थोड़ी ना कोई वहाँ पे जाएगा. So you must talk about the people who are living there. People who are living in Chandigarh, they are very open-minded. Open-minded means they don't have that orthodox and conservative thinking that they keep on they keep on poking their nose into others' affair, दूसरों के काम में टांग अड़ाना. So they are not that kind of people, and I would say that they have like quite sophisticated societies, so who are well-mannered, educated, okay, and they know how to deal with society, but at the same time they are quite connected to their roots. They follow all the custom, traditions and cultures. Then I can talk about relish, luxurious lifestyle. So if I'm staying in Chandigarh, I can in fact enjoy, relish means enjoy, a very rich or luxurious lifestyle with having all the facilities around. Then quality of education for children. Obviously once I get married, I'll have children, I'll be thinking about the quality of education for my children. So if I'm staying in Chandigarh, that will not be an issue, that will not be a problem for me. Then the another thing is why I like this place is there is a proximity to nature. Proximity means closeness, नज़दीक. तो जो नेचर है मीन्स जो जितने हिली एरियाज़ हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हिली एरियाज़ बहुत नज़दीक है. आई कैन स्पेशली विजिट टू हिली एरियाज़ फॉर माई वीकेंड, और वेन एवर आई थिंक आई नीड टू एस्केप फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ. So that's also quite approachable or feasible for me. So these are the reasons that I would like to live in future. I would like to live in Chandigarh in future. Okay, I hope topic आपको clear हो गया होगा. So keep learning with me. All the best.